So hello everyone. At this class I am going to discuss some extra questions from the topic maxima and minima. Okay, already I have discussed about that maxima and minima, how to find maximum value, minimum value, how to find the local maximum value, local minimum value, and how to find the greatest and the least values, that is called absolute maximum and absolute minimum values, right? So let us discuss some problems, some extra problems. The first question is, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और क्वेश्चन से ये भी पता लगाना पड़ेगा कि whether you have to find the maximum minimum value or the absolute maximum absolute minimum value, right? So the first question, find the maximum profit. Find the maximum profit, इसका मतलब maximum value find out करना है. Yes, that a company can make if the profit function is given by this one, that is p of x is equal to 41 minus 72x minus 18x square. So here the function is this one, which is called a profit function according to this question, and you have to find the maximum profit from this function. Maximum profit means maximum value. So whether you have to find the maximum or minimum value, what are the working rules? I have given already the working rules. Find both first order and second order derivative of the given profit function. Okay, so here this is solution number 1. Here p of x is equal to 41 minus 72x minus 18x square. Find both first order and second order derivative. Yes, this is the first step to find the maximum and minimum value. Differentiation of any constant is 0. This will be as minus 72 minus 36x. Again find out the second order. Second order derivative क्या हो जाएगा? तो फिर only minus 36. Yes, okay. तो चलो first order and second order derivative तो मिल गया. What is the second step? Put f dash of x is equal to 0. Put first order derivative is equal to 0. Why? Why we need to put first order derivative equal to 0? To find all the possible critical points. Yes or not? Without critical points, we cannot determine maximum and minimum values. Yes, without critical point, we cannot determine maximum and minimum value. Critical point क्या होता है? These are the points which indicates that the function will give maximum value or minimum value. ठीक है, यही points से पता चल जाएगा कि ये फंक्शन से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू या दोनों वैल्यू भी मिल सकता है. ठीक है, सो पुट एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज minus 72 is equal to, we can write 36x, which means x is equal to minus 2. x is equal to minus 2. तो x का जो वैल्यू मिला, this is called critical point. You may get one or more than one critical point. ठीक है, एक भी critical point मिल सकता है या एक से ज्यादा भी critical point मिल सकता है. ठीक है, ओके. तो जो x का वैल्यू मिला, ये x का जो वैल्यू है, this is called critical point. But whether this point is the point of maxima or point of minima, कैसे पता चलेगा? Because you have to find maximum profit, that means maximum value. तो maximum value find out करने के लिए वो पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना, मतलब कौन सा पॉइंट में जाके हम लोगों को ये इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कौन सा एक्सट्रीम लेवल में जाके वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. सो दैट एक्सट्रीम पॉइंट, दैट पॉइंट यू हैव टू नाउ चेक वेदर दिस पॉइंट विल गिव द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. सो for this you have to put this critical point in the second order derivative. You have to put the critical points in the second order derivative to check the nature of the second order derivative function. To check the nature of the second order derivative function. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, that is at x is equal to minus 2, p double dash of minus 2. P double dash of minus 2. What is the value of p double dash of x? Minus 36. So p double dash of minus 2 is also minus 36 only, and we know which is always less than 0.
minus 36 is always less than 0. So therefore we can say that x equal to minus 2 is the point of maxima. Yes or not? If the second order derivative is less than 0, that means we can say that the point is the point of maxima. If the second order derivative is greater than 0, then we can say that the point is the point of minima. Okay, so now it is confirmed that this critical point will give the maximum value, because this point indicates the point of maxima only. So point of maxima का मतलब है कि from the given function we can find the maximum value, or you can say maximum profit. Okay, therefore at x equal to minus 2 find out the value of p of minus 2. क्या करूंगा मैं? x equal to minus 2 से maximum profit निकालूंगा. Put the value of x in the given function, that is 41 minus it will become plus 144, and this is 72. So 144 72, that is 113. Okay, so the maximum profit is 113. Okay, so in this way you have to solve this question. So since you have to find the maximum value, find both first order and second order, put f dash of x equal to 0, find the critical points, and then put the critical point in the second order derivative, check the nature of the second order derivative function. If it gives less than 0, which means the point indicates the point of maxima. If it gives greater than 0, which means this point will give the point of minima. And after that put the point in the given function to get the maximum or minimum value. Okay. So ये है क्वेश्चन. अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा. सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एट व्हाट पॉइंट्स, ठीक से क्वेश्चन को देखना है. एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, जो इंटरवल दिया गया है वो क्लोज्ड इंटरवल है. यस और नॉट? फ्रॉम 0 to twice pi. Does the function here, the function is sin twice x. Okay, does the function sin twice x attain its maximum value? मतलब कौन सा पॉइंट में, एट व्हाट पॉइंट्स पूछा, कौन सा पॉइंट में ये फंक्शन sin twice x मैक्सिमम वैल्यू देगा. इंटरवल भी क्लोज इंटरवल है, विच मीन्स यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू. मतलब द ग्रेटेस्ट वैल्यू एट विच पॉइंट, पॉइंट फाइंड आउट करना है, नॉट द वैल्यू. बट इफ यू नो द वैल्यू you can find the point also, or if you know the point you can find the value also. तो ultimately जाके point भी मिलेगा, value भी मिलेगा. But the question is, यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है 0 से लेकर ट्वाइस पाई तक है, क्लोज इंटरवल है. तो क्लोज इंटरवल जनरली कहाँ पे यूज होता है? इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लोज इंटरवल. जनरली क्लोज इंटरवल यूज्ड इन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फंक्शन. यस, सो व्हाट आर द वर्किंग रूल्स? So here the given function is sin twice x, right? Solution number 2. Here f of x is equal to sin twice x. Then find out only first order derivative. Differentiation of sin twice x is 2 cos twice x. Put f dash of x is equal to 0 to find all the critical points. That is cos twice x is equal to 0, or we can write twice x is equal to पाई बाई 2 हो सकता है. लेकिन एक बात, डोंट राइट ओनली पाई बाई 2. यहां पे 0 से 360 डिग्री तक, 0 to twice पाई तक है ना. ये जो इंटरवल दिया गया है 0 to twice पाई, ये किसका इंटरवल है? x का इंटरवल है, नॉट ट्वाइस x. ओके, यहाँ पे एंगल, ऑफ कोर्स यार एंगल इज ट्वाइस x, बट जो इंटरवल है, जो रेंज दिया गया है, वो रेंज किसका है? ओनली x का. ठीक है, तो x बिलोंग्स टू हियर क्लोज ब्रैकेट 0 to twice पाई. हमेशा x का ही दिया रहता है. ठीक है, ट्वाइस x नहीं, थ्राइस x नहीं, 4x नहीं, जो भी दिया रहेगा 4x, ट्वाइस x, थ्राइस x, वो नहीं देखना है. सिर्फ पर्टिकुलर वेरिएबल को देखना है. थीटा हो या x हो या y हो, जो भी हो, उसी का ही रेंज दिया रहता है क्वेश्चन में. ठीक है, सो ट्वाइस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो सकता है, बिकॉज वी नो cos 90 डिग्री 0. वी नो cos 3 पाई बाई 2 इज ऑल्सो 0.
We know cos 5 pi by 2 is also 0. We know cos 7 pi by 2 is also 0. ठीक है, इसके बाद मैं 9 pi by 2 क्यों नहीं लिखूंगा? The reason is, look at here, twice x का वैल्यू ये सब है ना, तो फिर x का वैल्यू क्या क्या होगा? pi by 4, thrice pi by 4, 5 pi by 4 and 7 pi by 4. Yes or not? मैं क्या बोला था, ये जो इंटरवल है x का इंटरवल है, तो x का इंटरवल 0 से 360 तक ही हो सकता है, 360 से ज्यादा नहीं होगा, राइट? ओके, तो you can check the values of x now. Why I have not written after 7 pi by 2 like 9 pi by 2, 11 pi by 2? What is the reason? Look at here. Pi by 4. Whether pi by 4 belongs to this interval? Yes. Pi by 4 belongs to close bracket 0 to twice pi. Whether 3 pi by 4? Yes, we all know 3 pi by 4 का मतलब है 135 डिग्री, तो 0 और 360 के बीच में ही है. 5 pi by 4. 5 pi by 4 मतलब कितना डिग्री होगा? 5 pi by 4 means 5 into 180 divided by 4, right? तो इसको that is the 45, 225. Yes, of course, 225 also belongs to 0 to 360. And the last one I have written here 7 pi by 4. 7 pi by 4 मतलब कितना डिग्री होता है? 7 into 180 by 4. That is 7 into 45. 45 into 7 कितना होता है? 315. So yes, 315 degree also lies between 0 and twice pi. After that, if I write, देखो, if I write 9 pi by 4, which means 9 into 180 by 4, which means 9 into 45, कितना होगा 9 into 45, which is always more than 360 degree ना, तो मतलब satisfy तो नहीं करेगा. Actually these are what, यहाँ पे जो x का values मिला, after putting f dash of x equal to 0, I got 4 values of x. These 4 values are what? These 4 values are the critical points. These 4 values are the critical points. Okay, now whether all these 4 critical points belongs to this interval or not? Yes, these 4 critical points only belongs to the interval 0 to twice pi. After that, if I write 9 pi by 4, it will not satisfy because 9 into 45 degree, which is always more than 360 degree. So it does not satisfy the range of x. Yes or not? इंटरवल के अंदर होना चाहिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स. लास्ट क्लास में मैं वही तो डिस्कस किया था जब मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का डेफिनेशन और एक एग्जांपल बताया था. तब मैं बोला था जो क्रिटिकल पॉइंट्स होगा, दोज क्रिटिकल पॉइंट्स मस्ट बी लाइज बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन इंटरवल. सो हियर द इंटरवल इज 0 to twice pi, मतलब 0 और 360 के बीच में होना चाहिए. इसीलिए 7 pi by 2 के बाद दूसरा एंगल्स नहीं लिखा. ओके, सो these are the 4 critical points. Now at each and every critical points, you have to check the value of the given function. ठीक है? At each and every critical point, you have to check the value of the given function. So the first critical point is pi by 4. So at x equal to pi by 4, find out the value of f of pi by 4. What is f of x here? Sin twice x. तो फिर f of pi by 4 क्या हो जाएगा? Sin of 2 into pi by 4. That means pi by 2. And we know sin pi by 2. Sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है. तो sin pi by 2 का value 1. Next angle, next critical point is 3 pi by 4. So 3 pi by 4 can be written as sin of 2 into 3 pi by 4. 2 and 4 will be cancelled, so this means it is a sine of 3 pi by 2. 3 pi by 2 can be written as pi plus pi by 2. Yes or not? So 180 plus theta lies in which quadrant? 180 plus theta lies in the third quadrant. And in third quadrant, according to ASTC rule, sine is always negative. So minus. It is even multiple, so sin 90. The value of sin 90 is 1. So ये हो जाएगा -1 तो फिर ठीक है. Next one is 5 pi by 4. So f of 5 pi by 4. This is equal to sine of 2 into 5 pi by 4. Okay. So यहाँ पे हो जाएगा तो फिर sine of
5 pi by 2. 5 pi by 2 can be written as twice pi plus pi by 2 also. Twice pi means 360 plus theta. 360 plus theta lies in first quadrant. In first quadrant, we all know that sign is always positive. So sin 90, that is 1. And the last critical point is 7 pi by 4. So 7 pi by 4 sine of 7 pi by 2. So 7 pi by 2 को break करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 pi plus pi by 2, I think 6 plus 1 7. Yes. So 3 pi means which quadrant? 360, 450, 540. 540 plus theta, that means it is in the third quadrant. So it is minus 1. Okay. So since you are asked to find the point, at what point the function gives maximum value? At what point the function gives maximum value? कौन सा points में मिला? Here total 4 critical points are there. Okay, so I have checked all the values. 1 यहाँ पे मिला, 1 यहाँ पे भी मिला. So at what points the function gives maximum value? At x equal to, you have to write like this, at x equal to pi by 4 and 5 pi by 4, the function gives maximum value, because at x equal to pi by 4 and in 5 pi by 4 only we got 1 और बाकी दोनों में मिला -1. अगर क्वेश्चन में पूछता कि at what point the function gives minimum value, तो फिर हो जाएगा 3 pi by 4 and 7 pi by 4. Okay, is it clear? So in this way you have to solve. Procedure same है, सिर्फ लिखने का तरीका, मतलब एंगल, क्रिटिकल पॉइंट्स कितना हो सकता है और कैसे मुझे पता चला कि ये 4 एंगल सी, 4 पॉइंट सी सेटिस्फाई करेगा, वो भी देखना है, इंटरवल के ऊपर बेस करके देखना पड़ेगा. ठीक है. सो सम मोर क्वेश्चंस आई विल डिस्कस नाउ. Let us take one more example, that is find the maximum and minimum values of the function x plus sine twice x. Find the minimum and maximum value of the function x plus sine twice x on, here also I have given here closed interval. Closed interval 0, twice pi. तो closed interval है, इसका मतलब क्या होगा? Means you have to find the greatest and the least value. Yes. तो इंटरवल देखना है ठीक से. ठीक है. अगर क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब होगा कि नॉट लेस देन 0, नॉट मोर देन 360, है ना. तो मतलब एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स आर गिवन. तो एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स दिया गया है तो मतलब you will get the greatest and the least value only from the extreme end points. Yes. Okay. So last question में भी वैसा ही था. So same way you have to proceed. So here f of x is equal to x plus sine twice x. Find out f dash of x. ddx of x is 1 plus 2 cos twice x. Then put f dash of x equal to 0. Find all the critical points. That is 1 plus 2 cos twice x is equal to 0, which means cos twice x is equal to minus half. So cos theta का वैल्यू हाफ तभी होता है जब 60 डिग्री होता है. तो यहाँ पे माइनस हाफ है, मतलब क्या हो सकता है? cos 2 pi by 3, which means 120 डिग्री. 120 डिग्री हो सकता है. तो दैट मीन्स ट्वाइस एक्स का वैल्यू 2 pi by 3 हो सकता है, 4 pi by 3 पॉसिबल है, 6 pi by 3 हो सकता है, एंड नॉट 6 pi by 3, सॉरी, दिस वन विल बी 8 pi by 3 एंड 10 pi by 3 हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट दिस 4 पॉइंट्स आर ओनली पॉसिबल? बिकॉज here also the interval is given close bracket 0, twice pi. किसका है इंटरवल? x का ना. so x का वैल्यू चेक करना है. till now I have written all the values of twice x only. so if twice x equal to 2 pi by 3, then x is equal to how much? only pi by 3. कैंसिल हो जाएगा 2. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? this is 2 pi by 3. this one will be I think 4 pi by 3 and this one 5 pi by 3. Okay, now 5 pi by 3, why it is the last critical point? Because if you check 5 into 180 by 3, right? So this is equal to 300 degree. So yes, 300 degree always lies between 0 and twice pi. But if you take next angle, it will be always more than 360 degree. Okay, so that's why I have taken
I have taken up to 10 pi by 3, the last critical point of twice x. So therefore the last critical point of x will be 5 pi by 3 only. The reason is this one only, okay, because 5 pi by 3 means 300 degree, and 300 degree always lies between 0 and 360. इससे आगे और मैं एंगल लूंगा तो और एक पॉइंट लूंगा तो वो 300 से 360 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये 4 पॉइंट्स को लेना पड़ेगा. ओके, नाउ according to our question, you have to check at each and every point, at each and every critical point you have to find the value of the given function. ठीक है, so at each and every critical point का मतलब है कि यहाँ पे तो 4 critical points मिला, but apart from these 4 points you have to include these 2 end points also. Yes, I forgot to mention in the last question. Last question में मैं ये 2 end point को नहीं लिया था, लेकिन लेना पड़ेगा, ठीक है, लेना पड़ेगा. I forgot to mention in the last question. Now I am telling that you have to take these 2 values also. You have to take the 2 end points whenever the closed interval will be given. ठीक है, so the first end point, that is 0. So at x equal to 0, find the value of f of 0. f of x क्या है? 0 plus sin to x plus sin twice x. तो अगर x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो the value of sin 0 is 0. Then at x equal to pi by 3, the value of f of pi by 3 क्या हो जाएगा? तो फिर pi by 3 plus sin 2 pi by 3, sin 2 pi by 3, this is equal to pi by 3 plus 2 pi by 3 can be written as pi plus pi minus pi by 3. Yes, 3 pi minus pi, 2 pi, pi minus pi by 3. 180 minus theta lies in second quadrant, and in second quadrant sign is always positive according to ASTC rule. So that is equal to sin pi by 3 only. So the value of sin 60 degree, is root 3 by 2. ये हो गया at x equal to pi by 3. Okay. Once again I am repeating, I forgot to mention in the last question, I forgot to include these 2 points. You have to include these 2 points also. Here I have included x equal to 0 में check किया, x equal to pi by 3, उसके बाद x equal to 2 pi by 3 में check करूंगा. So at x equal to 2 pi by 3, the value of f of 2 pi by 3 क्या हो जाएगा? तो फिर 2 pi by 3 plus sin of 2 into 2 pi by 3, that means 4 pi by 3, that is 2 pi by 3 plus sin of 4 pi by 3 can be written as a pi plus pi by 3. 180 plus theta lies in third quadrant, that is minus only. तो ये हो जाएगा 2 pi by 3 minus root 3 by 2. Next at x equal to, after 2 pi by 3, next critical point 4 pi by 3. तो 4 pi by 3 में देखता हूँ क्या होता है? f of 4 pi by 3, this is equal to 4 pi by 3 plus sin of 8 pi by 3. So 8 pi by 3 can be written as 3 pi minus pi by 3. So 4 pi by 3, 3 pi means 540, second quadrant में हो जाएगा. तो second quadrant में है तो 540, that is 3 into 180, 540, 6 into 90. So it is in the second quadrant. So in second quadrant sign is always positive. So this is equal to plus sin pi by 3, that is root 3 by 2. Okay. Next at x equal to, the next critical point is 5 pi by 3. So f of 5 pi by 3 का value क्या होगा? 5 pi by 3 plus sin of 10 pi by 3. So 10 pi by 3 can be written as 3 pi plus pi by 3. So if 3 pi minus pi by 3 lies in the second quadrant, so 3 pi plus pi by 3 lies in the third quadrant. So 5 pi by 3 minus root 3 by 2 हो जाएगा, because in third quadrant sign is always negative. And at last put x equal to twice pi. You have to take both the end points. Yes. So according to that is the working rules. So at x equal to twice pi, the value of f of twice pi, this is equal to twice pi plus sine into 4 pi. The value of sine 4 pi is 0, तो ये हो जाएगा twice pi. Okay. So at x equal to twice pi मुझे मिला twice pi. At x equal to 0 मुझे मिला 0.
ठीक है, at x equal to twice pi we got twice pi, and at x equal to 0 we got 0. Therefore we can say that this is the minimum value, and twice pi this is the maximum value. Okay, maximum means the greatest value and minimum means, according to this question, minimum means the least value. ठीक है, at which point x equal to twice pi, at x equal to twice pi we got maximum value, that means the greatest value, and at x equal to 0 we got the minimum value, which means the least value. ठीक है, 0 और twice pi के बीच में ही बाकी ये सब वैल्यूज होगा. तो ये सब वैल्यूज तो 0 twice pi के बीच में अगर होगा तो मतलब these are not the maximum or minimum value. Okay, so in this way you have to solve this question. Okay, next question I will discuss now. So the next question, read the question properly. Find the two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible दिया गया है. प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. व्हाट डज इट मीन? एज लार्ज एज पॉसिबल मीन्स प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ओके, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो ये सब क्वेश्चंस में ना क्या होता है कि फंक्शन को खुद कंस्ट्रक्ट करना है. जनरली अभी तक मैं जितना क्वेश्चंस डिस्कस किया है अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, फंक्शंस क्वेश्चन में दिया गया था, बट दिस इज वर्ड प्रॉब्लम. सो हियर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द फंक्शन बाय योर ओन. कैसे? क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसी को लेके फंक्शन बनाना पड़ेगा, अपना मर्जी से फंक्शन नहीं बनाना है. ठीक है, सो सिंस यू हैव टू फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24, let the first number be x. Okay, then the second number we can take 24 minus x. Since the sum of the two numbers are 24, you can take the first number as x and the second number 24 minus x. Is it clear? Okay, तो ये तो मैं numbers assume किया. अभी क्या बोला गया है? You have to find the two numbers, right? इसका मतलब अगर x का वैल्यू निकल जाएगा तो सेकंड नंबर भी निकल जाएगा. ठीक है, so you have to find the value of x, but before that you have to arrange the function whose product is as large as possible. बोला गया whose मतलब किसका? ये दोनों नंबर का, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम बोला गया है. as large as possible means the product is maximum. Okay, so let p be the product. Let P be the product. हम लोग assume कर लिया कि P product है. So therefore, according to question, we can arrange P of x is equal to x into 24 minus x. Can I write? P is the product. Product of what? Product of the two numbers. And we have considered the two numbers as x and 24 minus x. तो product का मतलब तो multiply ही करना है. But here why I have written P of x? Direct क्यों मैं P नहीं लिखा? Because प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो मतलब प्रोडक्ट को फंक्शन एज्यूम करना है. ठीक है, प्रोडक्ट को फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा. एज लार्ज एज पॉसिबल दिया गया है. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं दिया गया है, सिर्फ मैक्सिमम बोला गया है. तो इसीलिए प्रोडक्ट को फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन पी ऑफ एक्स. एक्स ही क्यों लिखा? बिकॉज the numbers are in terms of x only. Okay, so this is the function. क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए. प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम हुआ तो देन ओनली वी कैन एबल टू फाइंड द टू नंबर्स. तो प्रोडक्ट मैक्सिमम है या मिनिमम है, अभी कैसे सॉल्व करना है? सेम प्रोसीड्यूर, जैसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स दिया गया है, वही स्टेप्स. ठीक है, सो find the first order and the second order derivative. So find p dash x. इसके पहले इसको एक्सपांड करने से बेहतर होगा, that is 24x minus x square. Now if you find the derivative, it is 24 minus twice x. Then find p double dash of x. p double dash of x हो जाएगा तो फिर -2. Then what you have to do, put the first order derivative equal to 0 to find the critical points. That is 24 is equal to twice x. और x is equal to 12. So there is only one critical point. ये critical point को कहाँ पुट करना है? In the second order derivative. Now at x equal to 12,
check the nature of the second order derivative, that is p double dash of 12, which is equal to minus 2 only, and this is always less than 0. Yes or not? Since p double dash of x is less than 0, therefore we can say that x equal to 12, this point is the point of maxima, is the point of maxima. X equal to 12 is the point of maxima. Is it clear? तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा. ठीक है, ये पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगा. So since x equal to 12 is the point of maxima, तो that means इसका मतलब यहां से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. और क्वेश्चन में भी तो वही बोला गया है कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. So that means it is confirmed that the first number, therefore the first number is 12 only. X equal to 12 का मतलब है कि first number 12. If the first number is 12, so clearly we can say that the second number is 24 minus 12. This is equal to 12, and the sum of the two numbers 24 ही होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 12 ही कैसे हुआ, कैसे पता चला? बिकॉज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम बोला गया है. तो एट x इक्वल टू 12 मैं जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नेचर चेक किया तो वही मिला मुझे कि ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू ही देगा. तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि यस इट इज करेक्ट ओनली. So that's why we can consider that x equal to 12 is the first number. Similarly, the second number also 12 only, because 24 minus 12. Okay, so this is the solution. So ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स होने से फंक्शन खुद कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, फंक्शन को खुद कंस्ट्रक्ट करना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है. फंक्शन क्या होगा, बिकॉज अगर फंक्शन रॉन्ग हो गया तो बाकी प्रोसीड्योर भी रॉन्ग हो जाएगा. फंक्शन अगर करेक्ट हुआ तो एटलीस्ट यू कैन able to find first order, second order, then you can put first order equal to 0. You can find the critical points. Okay, so these are the few examples of maxima and minima. Practice more sums from the chapter maxima and minima, actually from the chapter from application of derivatives, because it is interesting chapter and important also. Okay, application of derivatives बहुत important है. इससे weightage भी ज्यादा है, board exam हो या entrance exam हो. Okay, so thank you for today.